This call is now being recorded. चलिए पढ़ना चालू करते हैं कि क्या होते हैं एल्गे, क्या होते हैं उनके लाइफ में, एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गे विल गेट टू सी. In plant kingdom, this is a topic we're going to start with. Topic of my algae. So let's see the general traits of the algae. Now, algae are the group of plants, or they come under the kingdom of my plant kingdom, right? They come under the specific group called as my Thelophyta. So now they have been kept under group of my Thelophyta. The reason is that इनको reason रखा गया इनको Thelophyta के अंदर रखने का. Why Thelophyta? Because their plant body is called as my thallus. Plant body जो आपको इनकी मिलेगी, that is known as thallus. Now when I say that इनकी plant body को हम यहाँ पे thallus बोलते हैं, इसको बोलने का यहाँ पे reason ये होता है that they don't have root, stem and leaves. So you will have no roots, stem and leaves. All right, I'll make it red. ठीक है, I'll make it red. ठीक है, I hope. Right करते white कर देते हैं, चलो इसे white कर देते हैं, white भी दिखेगा black के ऊपर अच्छे से. ठीक है. So no root, stem and leaves. ठीक है. So they don't have any stem, root and leaves. आपको इसमें नहीं मिलते हैं. That's why this plant body is called as my thallus. तो thallus body मतलब ना ही root है, ना ही stem है, ना ही leaves है. Then उसके बाद याद रखना ये algae, it's a very small plant, right? You have like small plant and they are mainly going to be aquatic. They are mainly aquatic, right? Or grow in a damp, moist soil, or you can find them growing in a damp and moist soil. Right? So mainly आपके aquatic होते हैं, और you can find them growing in a damp and moist soil के अंदर आपको grow करते मिलेंगे. कई बार you can find them growing on a tree as well, but moisture वहाँ पे होना चाहिए. So you don't find them growing in a dry area. Algae cannot be seen growing in a dry area. Okay. Then no vascular bundle has been seen. So there is a presence of no vascular tissue. No vascular tissue is seen. So that means xylem phloem आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं. First of all, algae काफी छोटे होते हैं. They don't need xylem phloem, right, for the conduction of my food or conduction of your water. इसके साथ साथ मेरा जो algae यहाँ पे होगा, because they are seen in aquatic habitat, they don't need vascular tissue, right? So vascular tissue is going to be absent, so that is not seen. उसके अलावा embryo development is also absent, or I would say embryo formation. याद रखना, embryo formation is absent. तो embryo formation आपको यहाँ पे होते हुए नहीं मिलेगा. आपका प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे थैलस से आपको रूट, स्टेम, लीव्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और ये आपके मेनली आपके होते हैं एक्वेटिक, डैम्प एंड मॉइस्ट सॉइल में आपको ग्रो करते हैं. आपके वास्कुलर टिश्यू आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. देयर इज नो वास्कुलर टिश्यू इन देम, एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलता. यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन हैपनिंग इन दैट, राइट? एल्गे है, आई डोंट हैव टू मेंशन दैट दे आर गोइंग टू बी फोटोसिंथेटिक इन नेचर, सो दैट इज समथिंग यू ऑल नो दैट. नाउ लेट्स ट्राई टू सी सम अदर ट्रेट्स. कुछ यहाँ पे और ट्रेट्स हम यहाँ पे देखते हैं. लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट देयर मेन प्लांट बॉडी. सो मेन प्लांट बॉडी जो इनकी होती है यहाँ पे, दैट्स गोइंग टू बी गैमेटोफाइटिक. सो अगर आप किसी एल्गे को ऑब्जर्व करते हो, अज्यूम दैट अगर आपके सामने कोई सुबह सुबह एल्गे रख दे, सुबह सुबह यू कम अक्रॉस एल्गे इन फ्रंट ऑफ यू, सो अज्यूम दैट दिस इज द एल्गे. सो एल्गे का जो मेन प्लांट बॉडी होता है ना, वो आपका हेप्लॉइड होता है. सो मेन प्लांट बॉडी एल्गे का आपका हेप्लॉइड होगा. दैट मींस इट इज गोइंग टू बी हैविंग अ गैमेटोफाइटिक बॉडी. इट विल हैव गैमेटोफाइटिक बॉडी. So when I say gametophytic body, that means main plant body आपकी यहाँ पे haploid है. So when you observe a algae, it is going to be have a main plant going to be haploid body. So इसे हम बोलते हैं as a main plant body. That's a main plant body. Oh sorry, I have this now habit of using different color ना. White. Let's jump back to white. It's a main plant body. Now let's try to understand कि when you observe the algae ना, what do you get to see in that? Algae में आपको मिलता क्या क्या है वहाँ पे, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. So let's say there is an algae over here. This is algae you have.
हैप्लॉइड रहेगा, इसकी पूरी प्लांट बॉडी इसकी हैप्लॉइड रहेगी. आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव अ गैमेटोफाइटिक बॉडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. नाउ एल्गे विल हैव प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सो यू विल हैव समथिंग लाइक योर एंथ्रीडियम. सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज योर एंथ्रीडियम. एंड एंथ्रीडियम के अंदर आपके बनाए जाते हैं आपके मेल गैमेट्स, एंड द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एज माय एंथेरोजॉइड्स. एंथेरोजॉइड्स. Okay. Similarly, you will also have a female reproductive part. Female reproductive part over here will you call as my oogonium. And this oogonium will be forming your egg. So when someone tells you that you have a gametophytic body, जब आपको कोई कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक gametophytic body है, so that means it will form the gametes. It is a gametophytic body. It's a gametophyte. क्योंकि मेरे यहाँ पे गैमेटोफाइट है तो यहाँ पे मेरे गैमेट्स बनेंगे. एंड यू कैन सी दैट हैपनिंग कि मेरा एंथ्रीडियम के अंदर से मेरा एंथ्रोजॉइड बन रहा है, दैट्स अ मेल गैमेट. एंड ओगोनियम के अंदर से मेरे यहाँ पे एग बन रहा है. सो जब मेरा एंथ्रोजॉइड यहाँ पे बनाया जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बी लाइक हैप्लॉइड गैमेट. सो ये आपका हैप्लॉइड होगा यहाँ पे. आई थिंक दैट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल. सिमिलरली व्हेन यू फॉर्म द एग, दैट एग ओवर हियर विल आल्सो गोइंग टू बी योर हैप्लॉइड इन नेचर. ठीक है. नाउ देयर इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ देयर इज वेरी वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. आपका एग यहाँ पे बन रहा है, आपका एंथ्रोजाइट यहाँ पे बन रहा है. ये दोनों फ्यूज करेंगे. नाउ आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू दैट दे लिव इन वाटर एंड दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. उसके अगर काम होगा नहीं. सो पानी के अंदर आपका एंथ्रोजाइट स्विम करके जाएगा कोई दूसरे एल्गे के oogoनियम के पास, एंड वहां पे एग होगा. राइट. सो देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी ओवर हियर. ईदर द एग आर रिलीज इन द वाटर, or you have this anthrozoid going inside the oogonium and fusing with the egg. तो दो पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे हो सकती है. या फिर एंथ्रोजॉइड ट्रैवल कर करके जाएगा अपने ओगोनियम तक, ओगोनियम के अंदर जाके एग के साथ फ्यूज करेगा, या फिर ये एग भी आप पानी में रिलीज कर दोगे, एंथ्रोजॉइड भी आप पानी में रिलीज कर दोगे, एंड देन दे विल कम एंड फ्यूज विद ईच अदर. राइट. सो इमेजिन दैट, 2 मिनट के लिए आप सोच लो यहाँ पे, दैट यू हैव वन मोर एल्गे समवेयर ग्रोइंग कहीं दूर. So kahin dur you have one more algae growing over there. So this algae will also have the anthridium, will also have the archegonium. इसके पास भी इसका होगा यहाँ पे, sorry not archegonium, oogonia. And so this will be my oogonia over here. Now in this oogonium you will find कि आपका यहाँ पे egg होगा. So you'll have the egg over here. Now let's try to understand. Let's imagine that कि आपका एंथ्रोजाइड आपने पानी में रिलीज कर दिया, and now this एंथ्रोजाइड will स्विम कर करके ये आपका पहुंचेगा आपके ओगोनियम तक. राइट. सो ओगोनियम में भी यहाँ पे क्या किया हुआ, व्हाट द ओगोनियम हैज डन, ओगोनियम हैज रिलीज देयर एग इनसाइड द वाटर. सो इमेजिन दैट कि ओगोनिया के अंदर आपका एग था और वो एग को उसने बाहर निकाल के पानी में रिलीज कर दिया. नाउ लेट्स सी हाउ दिस इज गोइंग टू लुक लाइक. सी, इमेजिन दैट यू हैव अ एंथ्रोजॉइड. राइट. सो यू हैव दिस एंथ्रोजॉइड ओवर हियर विद सम फ्लैजेला. ये आपका हैप्लॉइड है. दिस विल कंबाइन विद द एग. वो भी आपका हैप्लॉइड है यहाँ पे. राइट. जब इनका यहाँ पे फ्यूजन होगा, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट. सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर जायगोट. तो आपके यहाँ पे डिप्लॉयड जायगोट आपके यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगा. अब जैसे ही आपके यहाँ पे जायगोट बनकर रेडी हो गया, नाउ व्हाट डू यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. आपको मैंने पहले ही बताया था कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता. You don't find any kind of embryo formation happening over here. So the one thing which will be happening here is your zygote will undergo meiosis. जैसे ही आपका जायगोट बना, this zygote is a diploid cell, it will undergo the meiosis. So अगर मेरा जायगोट यहाँ पे meiosis करेगा, अच्छा, alright, okay. So as soon as my zygote undergoes meiosis ना, तो मेरा जायगोट करता है यहाँ पे meiosis, और जब वो meiosis करेगा, you know that 4 haploid cells are getting formed. 4 haploid cells आपके यहाँ पे आपको बन के मिल जाएंगे. और ये 4 haploid cell आपको यहाँ पे बन के मिल जाए ना, these haploid cell are nothing but my haploid spores. These 4 haploid cells which have been formed, they will turn into 4 haploid spores, and these spores now will germinate and will give rise to new algae. अब ये spores जाके कहीं गिरेंगे और कहीं ना कहीं ये जाके गिरेंगे, and they will give rise to new algae. These spores will fall
and give rise to new algae. समझे, मेरा स्पोर यहाँ से आके यहाँ पे गिरा, राइट, इट फेल्ड ओवर हियर, और जैसे यहाँ पे आके गिरा इट हैज गिवन राइज टू न्यू एल्गे, यहाँ से आपका एक नया एल्गे बन के आपका रेडी हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से प्लांट ग्रुप के अंदर आपको मिलता है आपका zygotic meiosis। तो zygotic meiosis आपको होते हुए मिलेगा आपके यहाँ पे एल्गे के अंदर। सो एल्गेज आर द वन, इसके अंदर आपको zygotic meiosis आपको दिखता है। जैसे ही zygote बना इट विल अंडरगो द meiosis। सो याद रखना, यू विल फाइंड समथिंग लाइक योर zygotic meiosis होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। So as I've told you earlier as well, there will be no kind of your embryo formation. कोई embryo formation आपके यहाँ पे हो नहीं रहा। आपका zygote बना, it will undergo rapid meiosis and will give rise to the spores. अब spores जाके आपके गिरेंगे कहीं ना कहीं जाके, like they will fall down and they will give rise to new algae. So this will be the life cycle. This will be a very simple life cycle of the algae. You have to know very clearly that the main plant body here is going to be the gametophytic body, and this is how the story is going to start for them. Right? I hope ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है। ये बात आपको याद रखनी important है। ठीक है? Now let's see what has been mentioned over here. यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है हम यहाँ पे देख लेते हैं। Your algae can be simple, thalloid, autotrophic, chlorophyll bearing, aquatic organisms. They occur also in the moist stone, soil and wood. वहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। Some occur in association with the fungi. Now you know what is lichens. We have done this thing. Lichens के अंदर आपको मिलेगा आपका algae, and also on animals as well, like your sloth bear. अब sloth नाम का एक animal होता है, उसके ऊपर आपको algae मिल जाता है. You get to see algae growing on them. So if I show you the sloth over here, you can see the sloth जहाँ पे algae grow कर रहा है। फायदा ये होता है कि algae को एक एरिया मिलता है ग्रो करने के लिए, बिकॉज sloth पर is having a good amount of moisture। ठीक है, तो वहां पे ग्रो कर जाते हैं। sloth को फायदा ये होता है that because of the algae no one can see them, मतलब sloth gets camouflaged, right? So that's the advantage the sloth is going to get। so ये भी आपको होते हुए मिल जाता है। now let's talk about the reproduction। so हम reproduction की बात, तो you can have a vegetative reproduction over here, like via fragmentation। each fragment develops into a thallus। asexual reproduction में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है? by the production of spores। zoospores most common are the one which are the asexual spores। याद रखना, जब भी कोई zoospores की बात करता है, you should know they will have the flagella। they are my haploid spores and these haploid spores will be having the flagella। so whenever you get a term like a zoospore, you should know that they are my flagellated spores and they germinate and give rise to a new plant। okay, and then you have a sexual reproduction by fusion of two gametes। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके एंथ्रोजॉइट एंड oogonia में से आपका जो एग आ रहा है, they will come together, fuse and will give rise to a new zygote। okay, तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं quickly। अगर आपके दो gametes, if your two gametes are of equal size, let's say you have two gametes, right, and both of them belongs to equal size and shape, they might have a flagella, they might not have a flagella। so you can have a condition कि उनके पास यहाँ पे flagella है, और you might have a condition they might not have a flagella। अगर आपको ऐसी कंडीशन अगर आपको दिखती है, देर आपके दो मेल गैमेट्स आपके यहाँ पे, एक आपका मेल है आपका यहाँ पे, एक आपका फीमेल है। so let's say my sorry, this is my male, let's say that's my female। if you have this kind of condition over here, अगर आपके गैमेट्स इक्वल साइज के, यहाँ पे इक्वल शेप के, लाइक सेम साइज और सेम शेप के, then that is my isogamous condition। that is your isogamous condition। Similarly, if I get to see that my gametes of my unequal type and shape, अगर मेरे को dissimilar size और shape के मुझे मिल जाए, if my gametes of my dissimilar size of shape, that means you have a, एक बड़ा है और एक काफी छोटा है यहाँ पे, that is something you are finding in this। if they belong to dissimilar size and shape, then this condition is called as my anisogamous। anisogamous। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, that was my isogamous, what is my anisogamous। थर्ड कंडीशन आपके लिए अगेन ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दैट अगर मेरा एक गैमेट काफी बड़ा है, इट्स अ लार्ज वन, राइट, और वो है आपका स्टैटिक, स्टैटिक मतलब नॉन मोटाइल, वो आपका oogonia में बैठा हुआ है। सो यू हैव अ वेरी लार्ज गैमेट विद अ स्टैटिक व्हिच इज गोइंग टू बी नॉन मोटाइल, इसके पास आपको फ्लैजेला नहीं मिलेगा। ओके,
सो दिस इज जनरली गोइंग टू बी फीमेल गैमेट, जनरली आपने यहाँ पे हो जाएगा आपका फीमेल गैमेट, दिस विल बी माय फीमेल गैमेट ओवर हियर। तो फीमेल गैमेट कई बार क्या होता है, वो जैसे कि हमने देखा था एक एग होता है आपका, एंड दैट एग इज गोइंग टू बी लाइक इन द oogonia, और वो आपका कहीं जा नहीं रहा। तो अगर वो कहीं जा नहीं रहा, सो दैट मीन्स कि आपका मेल गैमेट आपका वहां तक आएगा स्विम करके। सो दिस फीमेल गैमेट इज गोइंग टू बी स्टैटिक नॉन मोटाइल। ऑन द अदर हैंड द मेल गैमेट इज गोइंग टू बी मोटाइल। मेल गैमेट इज गोइंग टू बी लाइक स्मॉल एंड मोटाइल। सो मेल गैमेट आपका यहाँ पे स्मॉल होगा कंपेरेटिवली, एंड वो मोटाइल होगा, राइट। अगर आपको ऐसा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हुए अगर आपको दिखता है, देन दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड माय oogamous। इसको बोलेंगे आप oogamous। सो यू विल हैव अ मेल गैमेट, you have a male gamete is going to be motile one. So this condition over here is called as my oogamous. So oogamous के अंदर you have a larger female gamete and you have a smaller male gamete, and the male gamete is the motile one. Female gamete will be the non-static, मतलब it will be non-motile. Static मतलब वो कहीं जा नहीं रहा, वहां पे बैठा हुआ है. So that is going to be called as your oogamous kind of condition. तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. So isogamous, something I've just told you that fusion of gametes similar in size and shape. They may be flagellated like in your Eulothrix and non-flagellated like in your Spirogara. Spirogara और Eulothrix दोनों जो आपके example है, they are the example of my green algae. Both of them are the example of my green algae. Okay. In isogamous, fusion of two gametes dissimilar in size. Fusion of two gametes dissimilar in size is going to be called as my anisogamous. Some species of your Eudorina, like एक species आपके यहाँ पे Eudorina, which is going to be anisogamous. oogamous क्या लिखा हुआ है? Fusion of one large non-motile static female gamete with a smaller motile male gamete, like in your volvox and fucus. These are the examples आपको याद रखने पड़ेंगे. Example के ऊपर बेस भी आपके सवाल आ जाते हैं इस चैप्टर में से. So example is something you have to be very clear with. Benefits of algae. Algae आपका फिक्स करता है CO2 on the earth, और large amount of CO2 is getting fixed by the earth. Like basically 50% आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 50% of my CO2 fixation एल्गे ही करते हैं. इनके वजह से ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल की जा सकती है. एंड दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन. सो याद रखना, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड दे आर आल्सो गोइंग टू बी प्लेइंग द रोल इन माय CO2 फिक्सेशन. ये दोनों चीजें आप यहाँ पे कर लेते हैं. दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. मेरे एल्गे यहाँ पे होते हैं, लाइक दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, और इनके वजह से ही आपका फूड साइकिल पूरा यहाँ पे ऑपरेट करता है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. उसके अलावा याद रखना, एल्गेज आर आल्सो समथिंग व्हिच कैन बी ईटेबल. यू हैव अ नंबर ऑफ एल्गे व्हिच आर गोइंग टू बी ईटेबल, लाइक यू हैव अ लैमिनेरिया, सरगैसम, पोरफायरा. ये सब आपके एल्गे आप खा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो. About 70% of the marine algae are used as a food. तो marine algae को हम यूज करते हैं as a source of food, like your porphyra, laminaria and sargassum. ये तीन नाम याद रखना. ये तीन नाम आपके सामने कभी भी आ सकते हैं as a question. So porphyra, laminaria, sargassum are the three algae which are used as a source of food. ये दो जो मेरे यहाँ पे algae, they are the brown one. Sargassum मेरा brown algae है, laminaria भी मेरे यहाँ पे brown algae है, porphyra is a red one. Then you have something like a agar, जो आपको मिलता है जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से. इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स एंड आल्सो इन द आइसक्रीम एंड द जेलीज. तो अगर आप आइसक्रीम और जेलीज खाते हो, तो उसके अंदर आपको एक सब्सटेंस मिलता है जो हम निकालते हैं आपके एल्गे में से, एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज माय अगार. तो अगार आपको मिल जाएगा, एंड दिस अगार इज समथिंग व्हिच विल बी सीन इन द, इट इज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया. इसमें से हम इसे यहाँ पे निकाल के वी कैन यूज देम इन द आइसक्रीम के अंदर आप यूज कर सकते हो, जेली में यूज कर सकते हो, और इवन आप इसके ऊपर आप ग्रो कर सकते हो आपके माइक्रोब्स को. सो आपको कई बार लैब के अंदर माइक्रोब्स को ग्रो करना पड़ता है. सो अगर आप लैब में काम करो तो आपको कई बार बैक्टीरिया को ग्रो करना पड़ता है, फंगाई को ग्रो करना पड़ता है. सो यू कैन ग्रो देम ऑन द अगार जेल. सो अगार जेल पे आप उन्हें वहां पे ग्रो कर सकते हो. तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ना, व्हाट हैपेंस विद द एल्गे. एल्गे के साथ क्या होता है, यू विल फाइंड देयर इज अ टर्म व्हिच विल कम अक्रॉस. सो अज्यूम दैट दिस इज द एल्गे, right? So it will have a cell wall, right? Obviously algae will have a cell wall, it will have the cell wall. So अगर मैं इसकी cell wall को मैग्नीफाई करता हूँ ना, when I observe the cell wall of the algae, तो assume करो कि मैंने इसको मैग्नीफाई किया. assume करो कि मैंने इसको मैग्नीफाई किया, तो मैग्नीफाई करने के बाद what I'll get to see ना,
इस सेल वॉल के अंदर, विद इन द सेल वॉल यू हैव प्रेजेंस ऑफ सम सब्सटेंस. So cell wall के अंदर you will have some substance which can be seen over there, and that substance is called as, मैं कुछ में यहाँ पे substance आपको मिलेगा सेल वॉल के अंदर, आपको मिल सकता है, और कुछ चीजें आपको मिल सकती है सेल वॉल के ऊपर लगी हुई. Sometime you can have certain things on the cell wall as well. Now these substance which I am drawing, whether inside the cell wall or on the cell wall, you call them as a hydrocolloid substance. ये जो substance आपके यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ना, या ये जो structures आपके सामने बना रहा हूँ, जो आपके सेल वॉल के अंदर आपको मिल सकते हैं या सेल वॉल के ऊपर लगे आपको मिल सकते हैं, यू कॉल देम एज अ हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस. हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस. Now when you have this substance on the wall or inside the cell wall, ये हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस होता क्या है? This is a substance which has a very strong water holding capacity. ये कुछ ऐसे सब्सटेंस आपके होते हैं जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है. So that's why we call them as a हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस. आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इनका नाम क्या होता है. तो आपको दो तीन नाम आपको याद रखने हैं. एक नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा, इज गोइंग टू बी योर एल्जिन. वन नेम इज गोइंग टू बी योर एल्जिन. एक नाम आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज माय केरेगिन. तो ये है एल्जिन एंड यहाँ पे केरेगिन. एल्जिन आपको मिलता है हमेशा, अब ये याद रखना, एल्जिन आपको हमेशा मिलेगा आपका ब्राउन एल्गे के अंदर. एल्जिन इज समथिंग यू विल ऑलवेज फाउंड इन द ब्राउन एल्गे, और कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा हमेशा आपको ब्राउन एल्गे के अंदर. ऑन द अदर हैंड केरेगिन इज समथिंग आई विल ऑलवेज फाइंड इन माय रेड एल्गे. ये आपको मिलता है आपका रेड एल्गे के अंदर. अब इसके बाद याद रखना कि आपको जो हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस आपके यहाँ पे जो अंदर मिल रहा है ना, दिस सब्सटेंस इज समथिंग जो आपका अगार भी होता है. सो आपने जो यहाँ पे अगार पढ़ा था, अगार हम निकाल रहे हैं आपके लिविंग ग्रासलैंड, तो अगार इज ऑल्सो वन ऑफ द हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस ओनली. तो भी आपका एक हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस है जिसको हम यूज करते हैं हमारे कमर्शियल बेनिफिट के लिए. तो याद रखना जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा ना कि हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस कहाँ मिलते हैं, यू कैन टेल देम इट इज समथिंग आई विल फाइंड इन द ऑन द वॉल और इनसाइड द सेल वॉल, या फिर सेल वॉल के अंदर मुझे मिल जाएगा, या फिर सेल वॉल के ऊपर लगा मुझे मिल जाएगा. और इसके दो एग्जांपल आपको याद रखते हैं, यू हैव एल्जिन एंड यू हैव केरेगिनिन. एल्जिन आपको मिलता है ब्राउन एल्गे के अंदर एंड केरेगिनिन आपको मिलता है आपका रेड एल्गे के अंदर. तो ये याद रखना, ये कई बार सवाल आ जाता है. So some marine brown and red algae produce hydrocolloid water holding substance like your algin and carrageenan, right? So this is what you will be finding in them. Protein rich, अब कई सारे algae होते हैं जिनमें आपको प्रोटीन काफी अच्छा मिल जाता है, like your chlorella and spirulina. तो chlorella and spirulina are my protein rich algae, और इन algae की मदद से, like these are the algae which actually are rich in protein. That's one thing you have to know. And these algae are the one जिसको आप consume करते हो as a source of protein. तो इनको हम लोग भी कर सकते हैं, और इनको इवन एस्ट्रोनॉट्स भी यूज करते हैं, लाइक योर स्पेस साइंटिस्ट जो आपके होते हैं. दे आल्सो कैरी दिस क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना विद देम एज अ सोर्स ऑफ फूड. तो बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन. अब एक और चीज याद रखना, स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला आर द वन विच आर माय यूनिसेल्युलर एल्गे. ये स्पाइरुलिना एंड माय क्लोरेला आर द वन विच आर माय यूनिसेल्युलर एल्गे. दीज आर गोइंग टू बी योर यूनिसेल्युलर एल्गे. ठीक है, ये बात भूलना मत, ये कई बार सवाल ऐसे ही आता है आपको. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. चलो, now algae will have certain groups over there. So algae will have a chlorophyceae, pheophyceae and rhodophyceae. आपके सामने तीन ग्रुप्स आपके सामने. So let's try to understand what are these three groups, और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए. We'll start with the green algae. So let's start with the chlorophyceae. That's a green algae. अब ग्रीन algae के बारे में आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा, वो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. There are going to be some few essential things you have to know. First of all, आपको वर्ल्ड में इनकी मिलती है अराउंड 7,000 स्पीशीज. So 7,000 species are seen throughout the world. They are mainly going to be seen in the freshwater ecosystem. So mainly they are seen in the freshwater ecosystem. ठीक है, I'll decide E over here. मराइन भी आपको मिल जाते हैं, बट मेनली आपको मिलेंगे आपके फ्रेश वाटर के अंदर, आपको मिलेंगे आपके ग्रीन एल्गे ग्रो करते हुए, राइट. कुछ चीजें आपको याद रखनी, जैसे कि आपका स्टोर्ड फूड जो आपके यहाँ पे होगा, द स्टोर्ड फूड जो आपके यहाँ पे होता है, दैट स्टोर्ड फूड इज गोइंग टू बी योर स्टार्च. सो स्टोर्ड फूड जो आपके यहाँ पे होता है वो आपके यहाँ पे स्टार्च होगा. जो भी ये लोग खाना बना के स्टोर करते हैं, स्टार्च. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. सेकंड थिंग, पिगमेंट्स आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे. सो इफ समवन आस्क यू कि मेरे पिगमेंट्स यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा
Pigments, you will have something like your chlorophyll A, chlorophyll B, right? These are, and you can also have something called as your carotenoids. तो ये कुछ आपके यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं, एंड दीज आर द पिगमेंट्स विल बी फाइंडिंग द ग्रीन एल्गे. ये पिगमेंट्स आपको मिलेंगे आपके ग्रीन एल्गे के अंदर, एंड इनकी मदद से वो अपना खाना बनाएंगे. सिंपल, दे विल डू द फोटोसिंथेसिस, राइट? Important thing, they will have the chloroplast. Obviously, they will have chloroplast. They are my plants. So their chloroplast will have something else. So chloroplast जो इनके पास यहाँ पे होगा, तो chloroplast will have inside the chloroplast आपको मिलेगा एक storage bodies. You will have some storage bodies. और जो storage bodies आपको यहाँ पे मिलेगी chloroplast के अंदर, those storage bodies are called as my pyrenoids. We call them as pyrenoids. तो स्टोरेज बॉडीज जो आपको मिलते हैं, दो स्टोरेज बॉडीज आर कॉल्ड एज पायरेनॉइड्स. और ये जो पायरेनॉइड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, इनमें आप क्या स्टोर करते हो? सो इनमें आप स्टोर करके अपने यहाँ पे प्रोटीन एंड योर स्टार्च. सो प्रोटीन एंड स्टार्च कैन बी स्टोर्ड इन माय पायरेनॉइड. सो ये आपका स्टोरेज के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. द अदर फ्रॉम these are some of the very simple basic things you have to know about my green algae. इसकी outer wall बनी होता है आपके pectose से. So the outer wall is made up of, so you'll have a cell wall as usual. Everyone has a cell wall. So you'll also have a cell wall. So इसकी जो outer layer होती है, so outer layer will have pectose. The green algae, green screen error. What kind of green screen error happening right now? I don't have a green screen. Outer layer and inner layer will have the inner layer will have your cellulose. This is defined with the cell wall. So इतनी बातें आपको याद रखनी है, and these are the examples you can see over here. Example, you have a Chlamydomonas is one of the example you have. You have a Volvox. Chlamydomonas क्या याद रखना? It is my again example of my unicellular algae. Then we have the Volvox. Volvox के साथ याद रखना, Volvox is a colonial one. This is the algae जो आपको colonies में आपको मिल जाती है. So these are my colonial algae. Your unicellular are my Chlamydomonas. Then we have Ulothrix and Spirogyra, and these algae over there are going to be called as your filamentous algae. So they are called as my filamentous algae. ठीक है. सो ये आपको याद रखना है कि आपके एल्गे की भी आपको अलग अलग लाइक उनके फॉर्म्स क्या है वो आपको याद रखना है. फिलामेंटस जब आपके सामने टर्म आएगा, सो विल से यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा. यूनिसेलुलर आएगा तो यू कैन से द क्लेमाडोमोनास, एंड वॉल्वॉक्स विल बी बिकम एन एग्जांपल ऑफ योर संगरूर. व्हाट इज हैपनिंग? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको क्लास देखने में? स्कूल फ्रॉम संगरूर, ओके. वॉल्वॉक्स विल बी हैविंग द colonial one, right? Now let's again see the examples over here. We have seen the chlorella as example, right? Then we also have Chlamydomonas. यहाँ पे लिख देते एक बार फिर हम इसे यहाँ पे. And you also have one more example जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कारा. तो ये तीन एग्जाम्पल आपके यहाँ पे हैं, क्लोरेला, क्लेमाडोनास एंड कारा आर द थ्री एग्जाम्पल्स यू विल गेट टू सी इन दिस. एंड दीज थ्री एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माय ग्रीन एल्गे. अब क्लोरेला एंड क्लेमाडोनास में कॉमन क्या है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ योर यूनिसेल्युलर एल्गे. ओके. ऑन द अदर हैंड ये सब आपके जो आपके यहाँ पे यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा, दैट्स आर दीज आर माय फिलामेंटस वन. तो ये तीन एग्जाम्पल आप याद रखो, एंड उसके साथ यू शुड नो. सो आई यू कैन रिमेंबर एग्जाम्पल लाइक दिस: C3 C cube प्लस SUV. SU में आपका आ गया आपका स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉल्वॉक्स. और C3 में you have your chlorella, Chlamydomonas and Cara. So that is also one of the ways you can remember the examples. So these are the examples of my green algae. So they come in different form of size, and the form and size of algae are highly variable. Chlamydomonas मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक. वॉल्वॉक्स colonial, फिलामेंटस आपका होगा आपका यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा.
फिलामेंटस मतलब दे विल हैव लाइक लॉन्ग स्ट्रैंड्स। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो, फिलामेंटस का मतलब भी आपको यहाँ पे होता है दे विल हैव लॉन्ग स्ट्रैंड्स ओवर देयर। सो chlorophyll you will have, and this will have your green algae. It's like, see the examples. You will have unicellular, colonial, clematis. Chlorophyll A, B will be seen in the chloroplast. Chloroplast has storage bodies called pyrenoids. So ये सब हमने यहाँ पे देख लिया था. You have seen all those things. Chloroplast will be having storage bodies called pyrenoids. Then we have Cladonas, Volvox, Luthrix, Pargara, and Cara are the examples. ये है सारे आपके examples हम यहाँ पे देख चुके हैं. You can see the picture in front of you as well. We have, अच्छा, this is something you have to know. Fragmentation के through ये लोग अपना कर सकते हैं vegetative reproduction. That's one thing you can remember. Asexually जब इन्हें reproduce करना होता है यहाँ पे, so they will be using a flagellated zoospores, some from the zoosporangia. And sexual के अंदर they can show everything. Isogamous, anisogamous and oogamous. ये तीनों चीजें आपको इस ग्रुप के अंदर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकती है. So these are the things you have to know in terms of my green algae. So I hope the green algae is clear to all of you. इतनी बातें आपको याद रखनी है in terms of green algae. Examples याद रखना. Examples याद रखना important है, and also should know that कि कौन है आपका unicellular one and which of them is going to be the multicellular or filamentous one, right? So that is one thing you have to know. Now let's move on to the next group over here. That's my rhodophyceae. अब rhodophyceae जिनको हम यहाँ पे बोल सकते हैं simply as a red algae. So इनके अंदर आपको क्या याद रखना है? So when I talk about my red algae, the first thing you have to know, आपको मिलती है around 5,000 species. You get 5,000 species throughout the world. They are going to be mainly marine. Mainly आपके ये आपके होंगे marine. So when I say they are going to be mainly marine, ना, that means कि they are mainly you find them in the oceans, right? आपको fresh water में आपको मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे. अगर मैं आपको एक बताऊं ना example of fresh water red algae, then you have an example of my Batrachospermum. Batrachospermum. So Batrachospermum is a name of a red algae जो आपका एक exception in the sense it is seen in the freshwater ecosystem. So this is the only algae, like one of the red algae which you find in the fresh water. बाकी generally आपके जितने भी आपके algae होते हैं they are going to be mainly marine. Okay. Now what kind of pigment I will find in them? So यहाँ पे मुझे pigments कौन से मिलेंगे red algae के अंदर? So pigments here are going to be, अब ये याद रखना, they are important. You will have pigments like your chlorophyll A. You will have chlorophyll D. A के बाद direct D, chlorophyll D, and then you have a phycoerythrin. Phycoerythrin. So phycoerythrin are these are some of the pigments which you find in my red algae. So phycoerythrin, chlorophyll D, chlorophyll A are some of the pigments I'll find in the red algae. And because of them also you'll get to see a red color is been seen because of them, or in pigments की मदद से they will carry out my photosynthesis. तो जो भी खाना बनाने का जो इनका काम होगा वो इन पिगमेंट्स के थ्रू इनका यहाँ पे होगा. अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप खाने को किस तरीके से आप स्टोर करते हो. तो स्टोरेज यहाँ पे आप कैसे करोगे? सो स्टोरेज आपका जो यहाँ पे होगा, तो स्टोरेज ऑफ फूड विल बी हैपनिंग in context or in terms of you will have something like your Floridian starch. Floridian starch. So Floridian starch के फॉर्म में आप अपने खाने को यहाँ पे स्टोर करते हो. तो याद रखना यहाँ पे खाना एज अ स्टार्च स्टोर नहीं किया जा रहा. It has been stored in a different form and that is called as Floridian starch. Now अगर आपसे कोई पूछता है कि Floridian starch का स्ट्रक्चर कैसा होता है, if someone comes and asks you कि Floridian starch कैसा दिखता है, then you can tell them the chemical structure I hope even the red one will be able to see. You will be able to see the red as well. Your नहीं दिखेगा तो बता देना. Chemical structure is similar to is similar to
amylopectin and glycogen. Amylopectin and your glycogen. ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन से सिमिलर होता है, बट याद रखना स्टोरेज फूड विल बी डन इन फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग स्टार्च. Pigment is important to be understood and what is the storage is being done over here. तो ये याद रखना and this is some of the basic information of my red algae. अब यहाँ पे एक और बात याद रखना कि red algae is the only algae which can be seen growing in the depth of the ocean. ये आपका एकलौता आपका यहाँ पे algae है जो आपको ओशन के डेप्थ में ग्रो करते हुए आपको मिल सकता है. So red algae जो आपका होता है is seen growing in the, you can find them growing in the depth of the ocean. काफी उस एरिया में भी ये ग्रो कर सकता है ओशन के डेप्थ में जहां पे आपके दूसरे एल्गे आपके ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपके डेप्थ ऑफ द ओशन के अंदर ये ग्रो क्यों कर पाता है, बिकॉज सी इन द डेप्थ ऑफ द ओशन द काइंड ऑफ वेवलेंथ यू फाइंड, जो वेवलेंथ आपकी पहुंच रही होती है आपके लाइट की आपके ओशन के डेप्थ में, दैट वेवलेंथ इज गोइंग टू बी योर वेवलेंथ ऑफ माय ब्लू एंड ग्रीन लाइट. सो याद रखना इन द डेप्थ ऑफ द ओशन द वेवलेंथ रीचिंग द wavelength reaching is blue and green light, is blue and green light. तो ये लाइट की वेवलेंथ आपके यहां तक पहुंच रही होती है. सो आपका जो विब्योर का जो स्पेक्ट्रम था उसमें से अगर देखा है तो ये वेवलेंथ आपकी पहुंच रही है ओशन के डेप्थ के अंदर. अब ये वेवलेंथ को इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे रेड एल्गे. जनरली बाकी सारे एल्गे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट यू विल फाइंड दिस वेवलेंथ ऑफ लाइट इज समथिंग यूज्ड बाय माय रेड एल्गे एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग इन द डेप्थ ऑफ द ओशन. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शैलो वाटर में ये नहीं मिलेगा, बट यू शुड नो दैट कि अगर आप ओशन के डेप्थ में जाते हो द ओनली एल्गे यू कैन कम अक्रॉस इज द रेड एल्गे, बिकॉज वो इस वेवलेंथ को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. दे विल यूजिंग दिस पर्टिकुलर ग्रीन एंड लाइट का वेवलेंथ को इस्तेमाल करेंगे वो लोग एंड दे कैन मेक देयर फूड ओवर देयर. So this is a wavelength used by my red algae. This is a spectrum of light. This is something can be used by my red algae. तो ये बात भी आपको इसके अंदर इनकी आपको याद रखनी है. This is one thing you have to know. ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. They have a red thalate due to a red pigment, phycoerythrin. Then you have your majority of marines, especially warmer areas के अंदर. They occur in both well-lighted region, closer to the surface of water, and at the greater depth in the ocean, where the relatively light penetrates less. तो हर जगह आपको मिल जाता है, आपके ओशन के सरफेस पे आपको मिलेंगे यहाँ पे, and they can also find them in the areas where you have a less light. Less light मतलब the light की wavelength जो आपके वहाँ पे आ रही होगी वो आपकी green and blue होगी. Now along with this is something now you have understood here. अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसमें हमने दो हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस आपको याद रखना है. So red algae will have two hydrocolloid substance जिनका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमने पहले भी देखे थे. एक आपका यहाँ पे होगा something called as your agar, जो आपका होगा carrageenan. So carrageenan and agar are the two hydrocolloid substance you have to know जो आपको red algae से आपको मिलता है यहाँ पे. Now let's see the examples over there. Example आपके यहाँ पे चार याद रखना है. You have a gracilaria, Gelidium. सर मिलिट्री स्कूल अमृतसर इज प्रेजेंट. बेटा थोड़ा लेट नहीं हो गया? Slightly late. Gelidium, and then you have something like your porphyra, and you also have Polycyphonia. These are the four examples you have to know: Gelidium, porphyra, Polycyphonia and Gracilaria. अब Gracilaria और Gelidium जो आपके यहाँ पे होते हैं इनमें से आपको मिलता है बन के, so from them you will get to see, इनमें से आपको मिलता है आपका अगार. इनमें से आपको आपका अगार मिल जाता है which has been, आप जानते हो इसको आइसक्रीम जेल में आप इस्तेमाल करते हो. Porphyra is a edible one. Porphyra को आप यूज करते हो as a source of food, so that's something you know. अब एक काम करते हैं, like we only have last 5 to 7 minutes right now. So let's do one thing. कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. These are the examples we have seen. So let me see if we have some question based on this. So let's quickly have a look at. ठीक है.
So you have this question with it. Fluoridine starch has a structure similar to what? फ्लोरिडियन स्टार्च जो आपका यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर यहाँ पे होता है? जल्दी से आप चैट में इसका आंसर दे सकते हो मुझे, फटाफट दौड़ के आइए बच्चे कंप्यूटर के पास में और चैट में आंसर लिखिए। ABCD क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फ्लोरिडियन स्टार्च हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू व्हाट? लुधियाना, तलवारा, as usual that's a correct answer. Yes, amylopectin and glycogen are the one which are, that's true. ये आपको नहीं यहाँ पे करेक्ट आंसर, दे हैव अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू दिस वन। देन बता दो, ये भी कर सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ अ यूनिसेल्युलर एल्गे? इनमें से कौन सा पेयर आपका यहाँ पे है जो है आपका यहाँ पे यूनिसेल्युलर एल्गे? बताइए। ये भी हो जाएगा, सिंपल है। लुधियाना हैज आंसर्ड, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तलवारा हैज आल्सो आंसर्ड। एनीवन एल्स वांट टू आंसर दिस? राइट, मोहाली एंड अमृतसर, दैट्स ट्रू। क्लोरेला एंड स्पारुलिना, ये बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। दिस गोइंग टू बी द, दीज आर माय यूनिसेल्युलर एल्गेस ओवर देयर। एन एग्जांपल ऑफ colonial algae, एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गे में से कौन सा आपका यहाँ पे कोलोनियल एल्गे आपका यहाँ पे बन जाएगा? ठीक है, दैट्स राइट, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछता इनमें से कौन सा बनेगा आपका यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ योर फिलामेंटस एल्गे, तो आप क्या बोलते हैं? अगर मैं पूछता आपसे कि इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल बनेगा आपका फिलामेंटस का, देन आपका आंसर क्या होता है यहाँ पे? चैट पे लिख दो क्या होता फिर आपका आंसर। इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू व्हाट इज माय फिलामेंटस एल्गे, it would have been your both C as well as my B. यूरोथेरिया में यहाँ पे फिलामेंटस हो जाता है, याद रखना दिस इज आल्सो गोइंग टू बी फिलामेंटस एंड माय स्पाइरोगेरा इज आल्सो गोइंग टू बी फिलामेंटस। ठीक है, दोनों आपके यहाँ पे फिलामेंटस आपके यहाँ पे हो जाते हैं। एल्गेज आर फाउंड वेयर? ABCD क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? 1 2 3 4 जल्दी बताओ। इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 4, बिल्कुल सी। यू कैन फाइंड एवरीवेयर, फ्रेश वाटर, माइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, हर जगह आपको मिल जाएंगे। ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये करा जा सकता है। जितना हमने पढ़ाई की अभी तक, हमने जितना पढ़ा उस हिसाब से आप कर सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल एंड सी सवाल आपसे क्या पूछ रहा है एंड टेक योर मिनट टू आंसर दिस। All right, someone has answered option A, someone has answered option B. बताइए बेटा, what do you think, what will be the answer in this? ओके, पूछा आपसे क्या गया यहाँ पे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट, एल्गे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट। द आंसर इज राइट, ये तो आपकी सही बात है। हमने ये बात किया था ना कि एल्गे आपका CO2 फिक्स करता है, उसके साथ साथ दिस एल्गे इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द नियरबाई एनवायरमेंट, सो दैट्स गोइंग टू बी ट्रू ओवर देयर। ऑप्शन बी, एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गे एंड कैरगिनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राउन एल्गे। अब ये बात आपकी यहाँ पे गलत है। दिस स्टेटमेंट हियर इज गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि एल्जिन आपका आ रहा होता है फ्रॉम द ब्राउन एल्गे एंड आपका कैरगिनिन आपका आ रहा होता है आपके रेड एल्गे में से। सो दिस ओवर हियर बिकम्स माय रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये मुझे मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे मिल चुका है। सो दिस हैज टू बी माय करेक्ट आंसर। बाकी भी आप यहाँ पे देख लो, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, दैट्स ट्रू, तो ये तो आपका सही है, दैट्स अ राइट स्टेटमेंट। एंड सरगैसम एंड लैमिनेरिया आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड, बिल्कुल सी बात है, इसको हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। और इनके साथ एक और हम ऐड कर देते हैं पोरफायरा। तो स्टेटमेंट बी मेरा यहाँ पे गलत हो जाता है। आई होप यू कैन सी व्हाई स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। एल्जिन आपको मिल जाए ब्राउन एल्गे में से, लेकिन ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं रेड एल्गे में से वो आपको मिल जाए। सो यू कैन सी दैट। तो इन्होंने बिल्कुल रिवर्स कर दिया उससे। सो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। आई हैव सीन you getting slightly hesitant in terms of solving statement based question, तो थोड़ा सा ध्यान से करा करो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को, राइट? ओके, लेट्स सी इफ वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम कर पाएंगे यहाँ पे। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे इज यूज्ड एज बाय अ स्पेस ट्रैवलर? कौन सा एल्गे में से इस्तेमाल किया जाएगा बाय अ स्पेस ट्रैवलर? जल्दी बताइए इसका आंसर। जितना एक्टिवली आप ये वाले आंसर्स कर देते हो, उतने एक्टिवली मैं चाहूंगा कि कुछ टाइम के बाद आप इवन करो अपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जिलेडियम किसको बिलोंग करता है यहाँ पे? जिलेडियम बिलोंग्स टू व्हाट?
हाँ, उसका आंसर सही था, इसका बताओ क्या होगा? जिरेडियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप? जिरेडियम ऑलवेज विल बिलोंग टू योर रेड एल्गे, विल ऑलवेज बिलोंग टू रेड एल्गे, ऑलवेज। ये नहीं कर पाओगे आप अभी आप। ओके सो लेट्स, ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अभी हम लोग अगर हम जब वापस मिलेंगे, सो या वी हैव टू, आई जस्ट टेल वन मोर थिंग इन दिस। हम ब्राउन एल्गे को खत्म कर देते हैं, रेड एल्गे को हम खत्म कर देते हैं। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सो रिप्रोडक्शन विल हैपन बाय फ्रेगमेंटेशन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा आपके नॉन मोटाइल स्पोर, एंड सेक्सुअल में याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दे विल ओनली हैव अ oogamous टाइप ऑफ कंडीशन। यहाँ पे आपको सिर्फ oogamous कंडीशन आपका भी मिलेगी। आपको यहाँ पे एनिसोगैमस आइसोगैमस नहीं मिलता, या वो oogamous कंडीशन बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो ये बात याद रखना, ठीक है? So next time when we'll catch up, we'll start with the brown algae. We'll complete that thing and we'll move on to your braphites. So that is something we'll try to do with addition of some questions. कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे। Alright. So that is something we have done class. We'll catch you again later. So चलिए, if you have any question then you can ask a question. अगर कोई सवाल है आपका तो आप सवाल अपना चैट में आप डाल सकते हो। अगर आपको कोई सवाल यहाँ पे नहीं है then yes, आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। We'll catch you again after some time. ठीक है? Alright people.